Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of our chapter number 4. So let's start. So dear students, today we are going to discuss the exercise of chapter number 4. So the first question as usual in our exercise is the fill in the blanks. So the first blank is, in eukaryotic cell, chromatin material is bounded by. तो न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल उसमें भी डिस्कस किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है इट इज़ बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्लियर? सो इट इज़ बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Blank number 2, a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as. तो ये राइबोसोम वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक ही मैसेंजर आरएनए के स्ट्रेच के साथ अगर एक ग्रुप अटैच हो राइबोसोम्स का, सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीसोम. क्लियर? सो द आंसर इज पॉलीसोम. ब्लैंक नंबर 3, डैश इज द प्लेस ऑन क्रोमोसोम्स वेयर स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड ड्यूरिंग सेल डिविजन. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बुक में जो स्टेटमेंट बाकायदा तौर पर लिखी गई है that centromere is the place in the chromosomes where the spindle fibers will get attached during cell division. Clear? Blank number 4, it says the endoplasmic reticulum with attached ribosomes is known as. तो dear students, endoplasmic reticulum की हमने 2 morphological forms पढ़ी थी और उनके ये 2 morphological forms they were related to the attachment of ribosomes. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द पार्ट विच इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द आंसर ऑफ आवर ब्लैंक इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Blank number 5, it says the soluble part of the cytoplasm is called. तो dear students, बहुत अच्छे से समझाया था आपको. The soluble part of the cytoplasm is called cytosol, which is further composed of sol and gel. Clear? So the answer is cytosol. Now question number 2, write whether the statement is true or false and write the correct statement if it is false. So कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसको हमने जांचना है, उसको हमने पढ़ के जो है एनालाइज करना है कि क्या वो ट्रू है तो उसके सामने ट्रू लिखेंगे, और अगर वो फॉल्स है तो उसके सामने फॉल्स लिखने के बाद हम उसको उसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे. क्लियर? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मच ट्रू. तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है. So the statement is true. The second statement, it says chloroplast and mitochondria do not have hereditary material. तो dear students, आपको याद होगा मैंने आपसे जिक्र किया था कि 3 ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास अपना जो है वो DNA यानी कि क्रोमैटिन मटेरियल उनके पास मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है. नंबर 1 is the nucleus, number 2 mitochondria, and number 3 the chloroplast. So this statement is false. इसका correct statement क्या बनेगा? That chloroplast and mitochondria they do have the hereditary material. Now the statement number 3, it says centriole is involved in cell secretions. So this statement is also false because the centrioles, they are involved in cell division, not cell secretion. Cell secretion से related हमने organelle पढ़ा था, that was Golgi apparatus. Clear? So according to this statement, the correct statement will be centriole is involved in the cell division. Now, statement number 4, it says sometimes many ribosomes get attached to same stretch of messenger RNA, forming a structure called the cytosome. No, dear students, this is false statement.
अभी हमने ब्लैंक्स में भी इसको डिस्कस किया था कि एक ही सिंगल स्ट्रेच ऑफ मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच हो तो उसको हम पॉलीसोम कहते हैं. क्लियर? सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी sometimes many ribosomes get attached to the same stretch of messenger RNA, forming a structure called the polysome. Clear? Now, the last statement of question number 2 is mitochondria are very important organelles of the eukaryotic cells. So it is true because they are the powerhouse of the cell. They are providing energy in the form of ATP. Clear? So it is true statement. Now, question number 3. Each question has 4 options and circle the correct answer. So these are multiple choice questions. The first multiple choice question is, which statement about the nuclear envelope is not true? तो nuclear envelope ये double nuclear membrane होती है जो कि in the eukaryotes उसके chromatin material के बाहर या उनके genetic material के बाहर मौजूद होती है. तो उसमें उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से हमने वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो कि सही नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू. सो ऑप्शन अल्फा सेज इट हैज स्पोर्स. यस डियर स्टूडेंट्स, इट इज ट्रू, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्पोर्स. ऑप्शन बीटा सेज इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इट इज ऑल्सो ट्रू. तो हमने कौन सी ढूंढनी है? जो ट्रू नहीं है. ऑप्शन चार्ली सेज इट्स इनर मेम्ब्रेन bear ribosomes. So that is not true. Clear? इसकी inner membrane पे ribosomes नहीं होते. RNA and some proteins pass through it. It is true. So only option which is not true is Charlie option. Now MCQ number 2, it says, which statement about plastids is true? तो plastids के हवाले से true statement हमने ढूंढनी है. They are surrounded by single membrane. No dear students, this option is alpha option is not correct because they are surrounded by double membrane. Option beta says they are the powerhouse of the cell. No dear students, the powerhouse of the cell is mitochondria, not the plastids. It is not true. Option Charlie says they are found in all organisms. No dear students, this is not correct because the chloroplast and the chromoplast means the plastids. They are only present in the plant cells. We are left only with the last option, that is delta option. They contain DNA and ribosomes. Yes dear student, it is true. हमने बात की थी कि इनके पास अपना DNA भी होता है और अपना ribosomes भी होते हैं. Now, the third MCQ, it states, which type of cell would probably be the most appropriate to study the lysosomes? तो lysosomes हमने पढ़ा था, इनके अंदर phagocytic activity होती है. They are showing phagocytosis and pinocytosis. So उनमें से जब हम उसको स्टडी करना चाहें तो कौन से सेल्स जो हैं उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे? सो अल्फा ऑप्शन इज phagocytic white blood cells. Yes dear students, जो white blood cells like neutrophils, like the monocytes, they have got the phagocytic activity in our body. So alpha option is correct for this MCQ. Nerve cell, mesophyll cell and muscle cell. So उनके अंदर phagocytic activity ये perform as such जो है वो mainly they are not involved. So the correct option for the third MCQ is alpha. That is phagocytic white blood cell. Now the fourth MCQ, it states, which of the following pairs of structure function is mismatched? नीचे 4 हमें जो statements दी गई हैं जिसमें structure और उसका function बताया गया है, उसमें से हमने ढूंढनी वो है जो कि मिसमैच्ड है. सो अल्फा ऑप्शन इज राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस. सो इट इज ट्रू, राइबोसोम्स दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस. ऑप्शन बीटा सेज न्यूक्लियोलस राइबोसोम प्रोडक्शन. यस इट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज न्यूक्लियोलस इट इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. हमने मिसमैच्ड को ढूंढना है. ऑप्शन चार्ली सेज गोल्जी एंड मसल कंट्रैक्शन. So this is inappropriate. This is not true because Golgi is related with cell secretions. Clear? So this option is not. This pair is mismatched. The answer to this statement is Charlie. Now the last MCQ, it says, which of the following statements about ribosomes is correct?
तो राइबोसोम्स के वाले से हमने वो स्टेटमेंट देखनी है जो कि सही है 4 ऑप्शंस में से। द फर्स्ट इज अल्फा ऑप्शन सेज दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम फ्री राइबोसोम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स तो चाहे वो फ्री हों चाहे वो अटैच फॉर्म में हों, दे आर राइबोसोम्स, सो देयर स्ट्रक्चर always remains the same. Option beta says they are enclosed in their own membrane. So this is not true because they are the only organelle which is devoid of any kind of membrane. They are membrane-less organelle. Clear? So it is also not true. Option Charlie says they are concentrated in the cisternal space of rough endoplasmic reticulum. So dear students, this is also not true. क्योंकि स्पेस के अंदर नहीं होते ये, ठीक है, सिस्टर्नल स्पेस में नहीं होते। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली लास्ट ऑप्शन, दैट इज डेल्टा ऑप्शन। इट सेज दे आर अटैच्ड टू द सिस्टर्नल सरफेस। सो इट इज़ ट्रू बिकॉज जो सिस्टर्नल मेम्ब्रेन होती है, जो सरफेस होती है, उसी के साथ ये अटैच होते हैं इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस मूवमेंट्स involved in the transport of materials across the cell membrane. तो हमने वो मूवमेंट्स का जिक्र करना है, वो प्रोसेसेस का जिक्र करना है जो कि सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पैसिव मूवमेंट्स एंड एक्टिव मूवमेंट्स, और पैसिव मूवमेंट में डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, क्लियर, सो एंडोसाइटोसिस, सो दीज आर द मूवमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड। Now, question number 2, it states, state various structural modifications in a cell involved in secretions. तो हमने structural modifications बतानी है secretion, cell secretions के हवाले से, जो कि एक सेल के अंदर होती हैं। तो आपको याद होगा कि the code comes in the form of messenger RNA from the nucleus. It passes through the nuclear pores and enters into the endoplasmic reticulum. वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको सिंथेसाइज करेगा, डीकोड करेगा, ट्रांसलेट करेगा इनटू प्रोटीन, देन इट इज़ प्रोजेक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द गोल्गी apparatus where it is packed in a membrane, and then as per the need of the cell it is transported inside within the cell or outside to the cell. Question number 3, list the processes blocked by mitochondrial failure in a cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, अगर वो ख़राब हो जाए, उसका फेलियर हो जाए, तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि रुक जाएंगे सेल के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के वो 3 स्टेप्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, मींस द कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोए, दैट इज ऑक्सीडेशन, नंबर 2 दैट इज Krebs cycle, नंबर 3 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड नंबर 4 द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी चाहिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो गया, अगर वो काम नहीं कर रहा तो एटीपी नहीं बनेगी, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट विल स्टॉप। तो ये 4 प्रोसेसेस यूजुअली ब्लॉक हो जाएंगे, Krebs cycle, electron transport chain, and the fatty acid metabolism and the active transport. Now question number 4, what will happen if a chromosome loses its centromere? अगर कोई क्रोमोसोम अपना सेंट्रोमेयर ही लूज कर जाए तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि सेंट्रोमेयर वो लोकेशन है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, जब सेंट्रोमेयर ही नहीं होगा, so the spindle fibers will fail to attach to the chromosome, and it will lead to the unequal distribution of chromosomes. Question number 5, how does autophagy help in converting a tadpole larva into an adult amphibian? तो आपको याद है कि tadpole larva जो होता है उसकी एक दुम होती है और वो पानी में रहता है और वो गिल्स के जरिए रेस्पायर करता है, जबकि एडल्ट फ्रॉग जो हम देखते हैं उसकी टेल नहीं होती है। तो ये कैसे रिमूव होती है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लाइसोसोम्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। सो मेटामॉर्फोसिस इसको कहते हैं, और मेटामॉर्फोसिस के जरिए जो लाइसोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, उसकी टेल को डाइजेस्ट कर देंगे और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फ्रॉग। एंड क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन, इट सेज, इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल? तो हमने सेल वॉल को डिटेल से डिस्कस किया, तो आपको क्या लगता है कि कोई है सिमिलरिटी इन दोनों के दरमियान में? सो ऑब्वियसली देयर इज नो सिमिलरिटी एट ऑल, बिकॉज
bacterial cell wall, it is made up of peptidoglycan, while the plant cell wall, it is made up of cellulose, hemicellulose and lignin and क्योटिन. आपको याद होगा सारी चीज़ें. तो एक तो कंपोजिशन का डिफरेंस. दूसरा, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, इसमें जो परमेबिलिटी है वो वेरिएबल है. मुख्तलिफ बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स मुख्तलिफ तरीके से वो परमेबिलिटी शो करती हैं, जैसे आगे चलकर हम इसको डिस्कस भी करेंगे बैक्टीरिया वाले चैप्टर में. और जबकि प्लांट सेल, इट इज़ फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे द न्यू चैप्टर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.